गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं इंग्लिश लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर वर्ड मीनिंग्स दिख रही हैं उसको ठीक प्रकार से नोटबुक के अंदर लेसन नेम ऊपर लिखना, उसके बाद में उसको ठीक प्रकार से नोटबुक में नोट करना है। इसके अलावा इसको आपको याद भी करना होगा। तो फर्स्ट लेसन नेम इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम इन मीनिंगों को लिखने के अलावा इस लेसन के कुछ भाग का मॉडल रीडिंग भी करेंगे, आदर्श वाचन भी करेंगे। आपको उन शब्दों को ठीक प्रकार से सुनना और उसके बाद में उसको दोहराना और घर पर भी इसको लाउडली रीडिंग करना, ताकि उच्चारण से संबंधित हमारी जो समस्या है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के घर पर भी हम इस लेसन को ठीक प्रकार से और लाउडली पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम मॉडल रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, देयर आर some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mention one such date and event: a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? Do you know which events the dates below refers to? A. 4 July 1776. B. 17 December 1903. C. 6 August 1945. D. 30 January 1948. E. 12 April 1961. And F. 20 July 1969. The answer are on page 23. First, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several species, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere it. Look at
like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box, sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mr. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. आज हम केवल इस फर्स्ट भाग का ही मॉडल रीडिंग अपन ने किया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम तब हल करेंगे जब इसका हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट बार में हम ट्रांसलेशन प्रारंभ करेंगे। जब तक आपको इस फर्स्ट भाग की मीनिंग्स को नोट करना और याद करना, दोनों काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।